I once again extend a warm welcome to all of you. I think you are welcomed by Tukaram Jadhav sir yesterday and Praveen Chauhan sir today, right? We have this third theme as far as introductory lectures are concerned for 3 years integrated batch. You must have understood what this batch is all about, right? Basic idea, at least you must have that primer with you, right? You know? One important aspect that is not very often discussed in classrooms is this one: the essential mindset for the journey to becoming an officer. We are not talking about mindset to be an officer that Department of Training and Personnel will take care. I know you will have some confusion regarding a few things that I would talk about, like Department of Training and Personnel, right? So, you must be thinking, what is it exactly? I hope everybody knows that every country is governed by what is called a government, or the wider term is political system, right? And every government has got departments. And there's one department as far as Indian government is concerned, that is called HRD, Human Resource Department. Within HRD, there is this body, Department of Personnel and Training, right? That take care of training of those people who pass this examination and they're recruited. In short, IAS, IPS, IFS, IRS officers, the training is taken care of by that department, right? UPSC does the recruitment part. It carries on that recruitment part. Once recruited, it is DOPT that takes care of training. Is that clear? Hmm? During that training, this will be discussed. What should be the mindset of officer? That does not mean we do not learn anything here while we are learning the syllabus. Syllabus of UPSC examination is designed in a manner that would start instilling in you those qualities, that mindset which is required to be an officer. Are you getting this? Am I sounding serious? let's let's not make it serious. Many will make it very serious, and that's why this becomes very important topic. I know this is like psychological kind of discussion, right? But you would realize over a period of time, that this was probably one of the most important discussions you had in the beginning of this journey, right? I hope everybody is clear about taking up this examination, right? Or there are some doubts in your mind? Everybody is clear, right? Okay. If you're clear about taking up this examination, are you conversant with the syllabus of this examination? Yes, no? See, you should be very clear. Yes to yes, no to no. Fair enough, right? Sir, I was pushed into this classroom by the family members. I came here with no willingness. Fair enough. We'll work on that, right? But you should be very clear what you know and what you don't know. If you don't know, you don't know. That is perfectly fine. Nothing wrong in that. People say that ignorance is not good. No, ignorance is good, right? If you're not ignorant, that means you're omniscient. What is omniscient? What is omniscient? One who knows everything, all knowledgeable. That is omniscient. And nobody's omniscient. Everybody is ignorant. Even Albert Einstein was ignorant, isn't it? Do you agree? The greatest scientist, right? Do you know Albert Einstein? Yes. One of the greatest scientists, right? I'm saying he was ignorant. About what? Maybe about international relations, maybe about political science, maybe about economics, right? The kind of understanding Adam Smith had about economics, right? To that extent, Albert Einstein looks ignorant. And Adam Smith, one of the most prominent or called father of modern economics, right, was ignorant about science. So who is omniscient? Nobody, right? Then tell me one thing: is ignorance wrong? No. What is wrong? I'll tell you. Ignorance of ignorance. गलत क्या है? What is wrong? Ignorance of ignorance. अज्ञान का होना वो तो रहेगा. Whether you like it or not, everybody is ignorant in some respects, right?
What is incorrect, what is wrong is to be ignorant about ignorant. That means what you don't know that you don't know. That is horrible. At least you should know, I don't know. Nahi pata hai to nahi pata hai. Fair enough. We are here to discuss, right? So my simple question was, do you know UPS syllabus? Either the answer is yes emphatically or equally emphatically no. If the answer is no, we can discuss that, right? If it is yes, I can go to some other direction, which eventually we would go, but after clarifying things, right? Okay. That is one important thing that we are supposed to take into consideration. Syllabus. Second, are you aware of the structure of this examination? Everybody knows, right? So preliminary examination, then mains examination, and then personality test. More appropriate word is personality test, because UPSC says so. And they look for personalities which are fit for administrative job, right? So probably this is the only examination, right, which is conducted throughout the year. Which is conducted throughout the year, right? So you have to wait for 1 year to get your result. All other examinations, they happen in a particular slot of days, right? And that's it. But this is one examination that tests everything. And that is where this question comes into picture. How to maintain that psychological stability, right? How to avoid all those stresses, strains, pressures that come in the journey of this examination, right? Please understand this is very fascinating journey, and something that is monotonous cannot be fascinating. Do you agree? Okay, let me give an example. If I have a job, every day I wake up in the morning, I get ready, I go to the factory, I manufacture same kind of product every day, right? And come back and sleep. Again, next day, wake up in the morning, go to do the same thing and come back. This is called monotonous job where there is no change as such, right? Are you getting this? तो ये अच्छा है क्या life? Is this good? And if you want your life to be adventurous, fascinating, interesting, there would be challenges. Either you go for that kind of a job which is monotonous, boring, in your words, right? Or you go for that thing which is quite fascinating. And fascination brings some risk, challenges, right? So this is fascinating examination, and the job is equally fascinating. And there would be challenges, pressures that you're supposed to handle, right? And today's entire discussion is based on that. Obviously, once this is over, these basic lectures are over, we would deal with syllabus, no doubt about that. We don't deviate from that. But the minds are to be cultivated before we begin the journey, because this journey is challenging. Please understand, I know you are in the era of T20s, right? 2 घंटे में innings khatam, right? But this is test match. This examination is test match. जो 5 दिन का test match होता है ना, so year long process. Do you know difference between test match and T20 international, right? T20s, they're finished within 4 hours. But in test matches, you have to be there on the ground for 5 days. Every session, every hour, every minute tests your patience, your perseverance, consistency, right? How alert you are. You can be alert for a couple of hours. What after that, right? So real test is test matches in cricket. Likewise, this examination is test match. It tests your endurance. What is endurance? Ability to sustain. Ability to sustain, right, in a particular situation, and ultimately winning it, right? This is long drawn out process as far as UPSC examination is concerned, going through 3 stages, right? That is one thing. Second, the syllabus is so vast. I'm not frightening you. आपको डरा नहीं रहा हूं, ठीक है? Syllabus is so vast that sometimes I say that the syllabus includes everything under the sun, including sun. Everything under the sun, including sun. Why including sun? You may get a question on fusion reaction. You're a fresh 12th pass, right? Am I right? तो इतना तो लिंक होगा ना, कुछ साइंस में पढ़ा होगा गलती से. You must have read science somewhere, right? Maybe up to 10 for those who went for arts, 12 for those who opted for science, right? So what is fusion reaction? And what is fission reaction?
हाँ बराबर है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम परफेक्टली फाइन विद रैंचोज इन द क्लासरूम। रैंचो, वो 3 days पता है ना? हाँ, you use any kind of language as long as your understanding is good, no problem at all. Fusion is coming together two elements, right? So what is sun? What is sun? It's a star. Keep it very simple. It's a star in which there is fusion of two hydrogen atoms, and they fuse and they create what? Helium. They create helium, and this is exogenic process. What is exogenic? Emitting heat, huge amount of heat, and that is the source of heat and light that we get, and we are able to live, right? So you may get question on sun as well, and there are number of other things associated with sun, for example solar winds, right? Wagera wagera. The syllabus is very vast, unending, I would say, right? And that again really requires some kind of cultivation of your psyche and mind to deal with such kind of things, right? Those of you who are thinking, sir, इतना vast syllabus है तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, I'll escape. Those who find escape, they find escape everywhere. They find escape everywhere. Number one. Number two, don't make me name them. मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, right? But there have been toppers who cried after becoming IAS, and that cry was not cry of joy. It was cry of crisis, some kind of problem. Are you getting this? Some toppers come to us later on, right? After passing the examination, felicitation हो गया, media आ गया, सब हो गया, है ना? Thereafter, they come to us with some personal problems. And one topper clearly told me, sir, you rightly said that UPSC examination is easier than life. Are you getting this? Examination is easier than life. So this cultivation of mind is not only going to prepare you for the examination, but for the life challenges, right? Okay, for example, tell me one thing. If you become IAS officer, that is sort of dream come true, right? उसके बाद तो ऐसे लगता है कि बस I'll be very happy now. It's not like that. Otherwise, why would an IAS officer commit suicide in Bangalore? Take this is not a huge challenge. It is, but on life scale, it is not. At your age, at the age of some 21, 22, 25, you're taking up this examination. That is challenging. That is challenging. But life throws much more challenges. So do not consider this as something unthinkable, something ungettable. No, it is very much gettable. The point is, are you psychologically ready? Right? Are you ready to take up challenges, overcome them, and script your own story? What is that story, success or failure? That doesn't matter. But are you ready for that? So it is all about this thing. So two things very clearly. This is year-long kind of process, examination itself, right? In 3 stages. That requires a lot of things in you, psychologically, mentally, physically, right? Secondly, the syllabus is vast. So it requires some kind of qualities in you which you can cultivate, right? ऐसा नहीं कि born होना चाहिए तो ही होगा. Nothing of that sort, right? So let's try and understand what all things are required as far as this journey is concerned. Clearly understand this is long journey. This is long journey. And I'll tell you one thing. Please note this in your brain, hearts, not on the paper, right? Please note this. Do not tell anyone that you are attempting for this examination. Take. I will tell you one thing. Generally, when we opt for UPSC examination, we tend to tell people that, yes, I'm preparing. And this boomerangs very badly later on. This examination is toughest in India, and it is said to be second toughest in the world, right? So let's accept certain facts, right? That some 1,000 positions should be eventually recruited based on requirement of that particular year, and some 10, 12 lakh people appear, right? It's all about giving a chance to oneself to be right there at the top. And I'm telling you, this is one career that probably you will tell me later on if you get through, right? What kind of life it is, because we are habitual to listening to all those things, right? If there is one thing that suddenly gives you everything that requires
hard work of a lifetime, that is this examination. I have a simple question for you. What do you want in life? I know you are quite young to really think about these kind of questions. And these days people find answers on ChatGPT. You're asking ChatGPT, what do I want in my life? That's bizarre, strange, right? Why you? Everybody wants something from life, right? What is that? Any thoughts that come to your mind? Peace. Wow, we should go to Himalayas. I agree. Next. Hmm? Which kind of stability? Mental, financial. Very good. I like it. आप क्लियरली बात क्यों नहीं करते? पैसा चाहिए सर. इसको इतना शुगर कोट करके अच्छा लगे, फील गुड आ जाए सामने वाले को. Why? सर, वी नीड मनी एंड दैट इज बेयर फैक्ट ऑफ लाइफ. ये पीस पीस बाद में है, राइट? पीस की बात ही वही करते हैं जिनके पास पैसा बड़ा है. नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसको मत देख. डोंट लुक एट इट. पॉइंट इज, either peace is talked about by the people who have enough money or those who are in Himalayas, right? Ascetics, उनको कुछ चाहिए नहीं, वो बात ही अलग है, राइट? बट आपको अगर कुछ चाहिए नहीं हो तो यहाँ पे नहीं आते. You want something from the life, right? If the case would have been you don't want anything, you would have been ascetic, सन्यासी, right? हो तो नहीं आप, ना मैं हूं, right? I'll tell you what people want in general. I'm not talking about exceptional cases. In general, everybody wants three things: enough money to live good life. Enough money to live good life. That is one. Second, बताओ. राइट. वो कहां से आते? थोड़ा सा नीचे जाओ, रूट्स की तरफ आ गए, मूल मुद्दे पे, कोर पॉइंट गए, पीस वगैरह सब है ना. पावर, सर, वी वांट पावर. दैट वाज माय थर्ड पॉइंट एंड यू आर जंपिंग टू इट. आई नो यू आर हियर फॉर पावर, राइट? Status, prestige that earns respect. I have a good job that earns me wonderful money, right? And that's gambling. Jugad re jugad. Satta. Would that earn respect from me? No. I'm earning decent amount of money through robbery. The second aspect is also important, right? Not just getting some kind of source of income, right? You need good amount of money for a stable, peaceful, happy life. Secondly, you want a job or occupation, whatever, that brings you some prestige and status. And third, there is hunger for power, right? Everybody wants power. And that is why I don't want to make it philosophical, but there have been scholars, philosophers who said that humans have lust for power. By nature, humans want to dominate. उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, उसको छोड़ो 2 मिनट के लिए. But let's take it in general that we want three things. What do you want? Enough amount of money. Second, power बाद में. Prestige and status रे, respect उससे आता है. Social status and prestige. And third, power. In a single stroke, you can get all three overnight. And that is this examination. Right? See, you may work throughout your life, putting in a lot of hard work. You may become a businessman, right? Who earns a lot of money. But that person had to undergo all those things for years, right? उसके बाद वो financial power आता है आपके हाथ में. But the moment you are out of your company, nobody is bothered about your power. Nobody is bothered about you're nobody, right? Getting this? You may become an actor, cricketer, an artist, but all these things require a lot of hard work for a number of years, 5, 6, 10, 20 sometimes. And sometimes people get something at the end of life. But at the age of 21, right, if somebody cracks examination, whatever, 22, 23, right, the kind of power, prestige, status you get is altogether different, right? So if there is a doctor here, an engineer here,
an artist, um, a, a politician, and then an IAS officer. तो आप किसको अलग तरीके से देखते हो? आई नो somebody may prefer artist, but वो एक होता है कि इंटरेस्ट, वो अलग बात है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट? पॉलिटिशियन को हम बहुत अलग तरीके से देखते हैं, वी लुक एट देम वेरी डिफरेंटली। So that is what it is, right? There is no doubt. Okay, let me now tell you as to why I'm talking about all these things. If the journey is difficult, if the examination is tough, right? There's always a probability of failure because some 1,000 people will be recruited from some 10 lakh people appearing, right? Why should I go for it? This is why you should go for it. You deserve one chance to yourself to try and see if you can be there. समझ में आ रहा है आपका? देखो, लोग बहुत कुछ करते हैं, लोग, people do a lot of things, right? People go for business. Suppose I start one business, it fails. What do? I go for another business, right? So that is going to be there. You are going to be in first year of graduation, right? You will have a number of other ways, but this is what people think, right? We should give one chance to ourselves in terms of getting into that position, right? It is worth it. And good thing about you guys is you have started early. You have started early, number one. Number two, in these 3 years, you can really build that kind of preparation which can enable you to get through this examination, provided you do it sincerely. Mark this word, phrase very important, provided you do it sincerely. I have many 3 year students coming to me after completion of 3 years here. They say, sir, should I go for the examination next year? I have only one question. Have you prepared mains examination thoroughly? They say, sir, 60%, 70%. This is rubbish, right? 3 साल क्या कर रहे थे फिर? Please understand that there are two things here. One, what you get from this side of the table, and more importantly, what you do, those who are on the other side of the table. मैं आपके घर में नहीं आ सकता. I cannot come to your home that hold your hand and write and answer, read a particular book. That you have to do, right? Yes, we are here to guide you, here to give you all the input that are needed, study material, everything you would get. But you have to put in the efforts. And I'm telling you, success or failure belongs to the candidate. It does not belong to us. What belongs to us is the role of catalyst, chemical reaction, catalyst, pata? Facilitator. Any kind of problems you face, yes, we are there. But ultimately, you have to study. You have to go in the examination hall and write the examination. Getting this? The success or failure is yours. We can at the most be helpful to you. All the academics for that matter, right? ठीक? तो उसका psychological preparation is very important for all these things, right? And UPSC has given how many attempts for open category? 6. Why? UPSC thinks that it is quite possible that eligible candidates may not get through once, twice, thrice. What does that mean? There will be certain factors which are not controlled by you, which denied you an opportunity in the first attempt, in the second attempt, third attempt. UPSC doesn't want to lose you. Why are you losing hearts? I know I'm talking about attempts quite early in the beginning, but this is one problem, right? Many students, when they don't get through prelims, they somehow go into depression. There is no need, right? And please do not fall prey to marketing. हम भी marketing करते हैं, हर कोई करता है. Everybody goes for marketing. पता है क्यों करना पड़ता है? पैसा. See, you are here for money, and then classes making money. You're making money. ऐसा नहीं होता. Everybody is working for money. Everybody wants to sustain life, right? तो करना पड़ता है. But I'll tell you one thing: do not fall prey psychologically to the marketing strategy of what is called IAS at 21. It is indeed important. ये important है. मैं इसको deny नहीं कर रहा हूँ. I'm not denying it. If you become IAS at 21, you would have best possible scenario of promotions. You can become chief secretary, right? If you become late, it becomes difficult. But more than that, what is important is what you do as an IAS officer.
There have been many who have cracked this examination at the age of 21, 22. वो एक दिन का मीडिया फ्लैश होता है, राइट? उसके बाद वेयर डू दिस पीपल गो? कहाँ जाते हैं लोग? अच्छा, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? टेल मी वन थिंग, which IAS officer is in the news currently? Oh, interesting. At what age did he become IAS officer? 30 almost, right? In his last attempt. In his last attempt. Does that matter? वो आपका रैंक में आना 4 दिन की चांदनी है. But this is what matters. What kind of work you do. So my sincere advice to all of you is, you get through this examination as early as possible. You should not spend time in struggle. But if struggle comes your way, you should not mind it. And you should focus on that thing. ठीक है, इस बार नहीं, next time हो जाएगा, लेकिन जब हो जाएगा, the moment I'm at that position, what would I do? Right? The enduring kind of respect does not come from cracking one examination. It comes from your work. How many IAS officers are there in Maharashtra? Hundreds of them, right? एक न्यूज में क्यों आता है हमेशा? नंबर वन. नंबर टू, there would have been many people who occupied that place, right? जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का पोजीशन है, इतने लोग थे, तब कुछ दिखा नहीं, प्रॉब्लम है. Okay, let me destroy that myth that people have in their mind that if you become an IAS officer, you can earn a lot of money. Don't do that. You are staking all your prestige, right? And you'll be powerless puppet. आप क्या होंगे? Powerless puppet. Puppet जानते हो ना? Puppetry. Even if you go corrupt by 1 rupees, how to add number of zeros on that? Politicians know it very well. And you become puppet in their hands. There's one officer which is not controlled by politicians, that is Tukaram Munde. And the kind of prestige he enjoys, nobody enjoys. Number one. Number two, करप्शन का पैसा क्या करोगे? टेल मी, कितना पैसा लगता है जीने के लिए इंसान को? हाउ मच मनी इज नीडेड? सर, 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, इतना कमाना चाहता हूं. पूत सपूत तो क्यों कमाना? पूत कपूत तो क्यों कमाना? If your child is capable, why to earn for them? And if they are incapable, why to earn for them? अगर capable है, if they are capable, they would earn for themselves, right? And if they are incapable, doesn't matter how much you earn, they'll destroy. वो महंगी कार लेकर के कल्याण नगर में किसी को उड़ाएंगे, फिर पूरी फैमिली बिहाइंड द बार्स. क्या पूत है? कितना कमाए, क्या करोगे? ये सब ऐसे होगा, राइट? Your focus should be on your life. And see, every parent has to ensure some kind of upbringing, enough money to sustain their journey up to getting their job. That is good. But ye kya hai? What is this? This is endless kind of lust for money that would make your life hell miserable, right? और रही बात सैलरी की, people say that sir, government officers की सैलरी अच्छी नहीं होती. I'll tell you one thing, ये IAS IPS से नहीं बोलना है, right? The reason I'll tell you, doesn't matter where you are posted, you get a bungalow in some acres, right? And throughout life, till your retirement, you get a cook, you get all these servants for your work at home, right? One IAS officer honestly said to me once that, sir, I don't understand how to spend even 4,000-5,000 rupees per month for my salary. Government is giving everything. And that salary, right? कार मिल रही है आपको, उसमें पेट्रोल डालने का टेंशन नहीं, उसका मेंटेनेंस का टेंशन नहीं, ड्राइवर का पेमेंट देने का टेंशन, सब कुछ तो गवर्नमेंट कर रहा है. फिर क्यों खा रहे हो? बस में डालेगा. There's a limit, right? And throughout the life, you save your salary. That is such a fund. You can live a very good life even after retirement, and you can buy home anywhere.
You first psychologically prepare yourself for a different kind of mindset. ओके, मैं सब क्यों बता रहा हूं? साइकोलॉजिकल माइंडसेट को प्रिपेयर करने का जो हम बात कर रहे हैं यहां पे, वन पार्ट इज पेपर 4, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी. सर मैं ना बाद में बहुत मतलब आई लर्न लॉट ऑफ मनी, ब्लैक मनी. And then while writing paper 4, sir, I would show them I'm honest. Why is it that the topper of paper 4 is most corrupt? Because you're bluffing, right? Every candidate who is IAS officer, IPS officer, IFS, they have passed this examination, right? And there's a paper 4, ethics and integrity. What do they do with it? UPSC every year is trying to change questions so that they're trying to read your mind. What kind of questions are being asked in paper 4? Right? For example, very simple question. What is integrity and honesty? Explain with example from your life. Got the question? Student come to us and ask, sir, क्या example दूं? It is from your life, right? हाँ? सर आपके नोट में है क्या? है. एक illustration के लिए हमने example दिया है life का किसी के, right? And because everybody is reading that note, everybody is writing same example. और वो examiner देख रहा है सबके लाइफ में एक ही घटना हुई है. Bluffings can be easily captured, you know. And that is why cultivate your mind. I'm going to talk about what all things you're supposed to do in next 3 years, and even after that when you appear for the examination. Slowly you have to develop your personality which is suitable for administrative job, and that is the single most agenda with which you are interviewed. UPSC interview is called personality test because they're testing your personality whether it is suitable for administrative job or not. Getting this? And right from day one, psychologically start preparing for that kind of personality. Right? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? समथिंग दैट एवरीबॉडी नोज. सिंपल एग्जांपल. इफ आई आस्क यू क्वेश्चन ऑन रिजर्वेशन, वेट कुछ आंसर मत करना. Those who enjoy reservation, they say, sir, reservation is everything. And those who don't enjoy reservation, they say, sir, it's useless kind of thing, we should stop it. Both these responses are based on your interest, based on whether I'm getting benefit or not from that. And this examination, UPSC is not Union Public Private Commission. It is not Union Public Private Commission. It is Public Commission. They want candidates who can think in terms of public at large. मैं कोई बात रख रहा हूं तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल है क्या? मुझे नहीं. सपोज आई कम फ्रॉम ओपन कैटेगरी और मुझे पूछा गया रिजर्वेशन अच्छा है क्या? व्हेन आई से सर इज इंपॉर्टेंट टूल टू affirmative action, we need to take those people who are marginalized, depressed, right? There are some problems in the policy which can be rectified, but that's an important tool. यहां पे क्या दिखता है? मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, right? I'm talking about people at large. If I belong to some reserved category और फिर यही सवाल मुझे पूछा गया, my answer should be same. उसमें फिर ये नहीं कि हाँ इसमें कोई फ्लॉ नहीं है सर, it must go on, right? Your opinions, your psychological makeup should be such that you rise above your personal benefits, your identity, your preferences, right? And start talking in terms of people at large. That is one. Second, ethics in paper 4 is not about general ethics. It's about administrative ethics. And administrative ethics is nothing but being legal, being constitutional. इसलिए संविधान पढ़ना पड़ता है, लॉज पढ़ने पड़ते हैं, right? So we have to cultivate our mind in that direction. Clear? So there are two parts of this entire lecture. One, how to handle different negativities, challenges which come with this long journey, and then how to cultivate the mind in terms of making it more suitable for the job that you're looking forward to. Clear? Okay. Let's look at few things that I have jotted down for you. So this is one, how to handle pressure. No doubt about that. ये pressure देगा आपको. See, let me tell you one thing. Those of you who are thinking यहाँ पे pressure है क्या सर, मैं कहीं और जाता हूँ, कहीं भी जाऊँ. You go anywhere, right?
Pressure is bound to be there. We are living in competitive world, right? We are living in competitive world. If you don't want pressure, I'm telling you, you can go to Himalayas, become a sannyasi. That's different story, right? और ये मत समझना कि उधर प्रेशर नहीं है, उधर भी कंपटीशन है सन्यासियों में. आजकल के सन्यासी भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दैट इज माय नॉट माय टॉपिक, राइट? लेट मी फोकस हियर. Pressure is everywhere. Okay, have you heard of somebody called Sachin Tendulkar? Who is he? आपके जनरेशन को ना एक आदत लगी हुई है टू सिंप्लीफाई थिंग्स. सचिन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या में कोई डिफरेंस है क्या? है कि नहीं है? हाँ, तो वो भी क्रिकेटर, ये भी क्रिकेटर, राइट? मोदी कौन है? पॉलिटिशियन. आपका कॉर्पोरेटर कौन है? पॉलिटिशियन. कुछ तो अंतर होगा, राइट? देन व्हाई डोंट यू मेक इट क्लियर? आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, राइट? उसका लाइफ, क्रिकेटिंग लाइफ हाफ वे भी खत्म होता है ना, ही वुड हैव बीन ग्रेटेस्ट. समझ में आ रहा है क्या आपको? एट द एज ऑफ 16 ही वाज कॉल्ड वंडर बॉय, एंड बाय द टाइम ही केम टू 25, जब तक हमारा करियर भी नहीं बनता, ही वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. समझ में आ रहा है? बट टिल ही प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच, राइट, वो हमेशा बोलता था इंटरव्यू में दैट व्हेनेवर वी आर सपोज टू बैट नेक्स्ट डे, मैं रात को सो नहीं पाता. ही कुड नेवर स्लीप एट नाइट व्हेन देयर इज बैटिंग ऑफ इंडिया नेक्स्ट डे. इतना बड़ा बैट्समैन है, दुनिया भर का बेस्ट बैट्समैन, लोग बोलते हैं, बॉलर्स डरते हैं उससे, ये डर रहा है दूसरे दिन के बारे में. ही इज नॉट एबल टू स्लीप. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सचिन, हिज कलीग आल्सो हैव नैरेटेड दिस स्टोरी. ये सोता नहीं, दूसरों को सोते उसने भी नहीं था, मस्ती करता रहता, उसको नींद नहीं आती थी प्रेशर की वजह से. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब तक वो देखता नहीं कि बॉल कैसे गिर रहा है, बाउंस कितना है, स्विंग कितना है, तब तक ही इज रेस्टलेस. एंड द मोमेंट ही सीज द कंडीशंस कि हाउ थिंग्स आर प्लेइंग आउट, टेस्ट में वो 2 आउट होने के बाद आता था, एंड देन ही यूज्ड टू टेल हिज कलीग्स, आई एम स्लीपिंग ऑन द टेबल इन द ड्रेसिंग रूम, राइट? 1 विकेट जाने के बाद उठाना. समझ में आ रहा है आपको? प्रेशर एंड फ्यूर आर रिक्वायर्ड टू टेक बेस्ट आउट ऑफ यू, राइट? बट द अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड फ्यूर, दैट इज इंपॉर्टेंट. Pressure and fear should not be such that they cripple you, they destroy you. It should be in that measure which keeps you alert, on toes, right? Takes best out of you. डर अच्छी बात है, बहुत ज्यादा नहीं, in a particular measure. If you don't fear, your performance is impacted. There has to be some fear that keeps you alert, right? मुझे एक्सीडेंट का फियर होना चाहिए, तब जाकर मैं अलर्ट तरीके से ड्राइविंग करूंगा. अगर मुझे एक्सीडेंट का फियर नहीं है ये तो मरेगा जाके, राइट? सो फियरलेसनेस इज नॉट गुड. आर यू गेटिंग दिस? डर के आगे जीत नहीं होता, डेथ होता है. ये सब फालतू की बकवास बंद करो एडवर्टाइजमेंट की, एंड कल्टिवेट योर माइंड इन राइट मैनर, राइट? ये डर के आगे जीते बोले कोल्ड ड्रिंक बेच रहे जिसमें केमिकल्स है, सच में डेथ है उसके आगे. यू आस्क तुकाराम मुंडे. हाउ टू हैंडल प्रेशर, ये नहीं लिखा. इट्स नॉट हाउ टू एलिमिनेट प्रेशर. नो, यू शुड नॉट एलिमिनेट प्रेशर, राइट? How to handle pressure, that is the question, right? How to handle ups and downs. After this lecture you feel like you're inspired, right? And please understand, all those sources of inspiration that are outside you are temporary. ये inspiration classroom खत्म होने तक रहता है, I'm telling you. The moment you go out of the classroom, inspiration has evaporated. Some students carry that for some hours, some for days, but at some point of time it is going to evaporate. The inspiration has to come from विद इन, बाहर से नहीं, राइट? तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है, कभी अच्छा लगता है, कभी प्रेशर आता है, समटाइम्स यू आर डाउन, यू फील लाइक दिस इज डॉन्टिंग टास्क, मेरे बस की बात नहीं है, नॉट माय कप ऑफ टी, राइट? हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स? सो सिंपल वे इज टू टेल योरसेल्फ एवरी टाइम दैट you are not appearing for the examination tomorrow while you're preparing, right? You focus on basic things, very basic things. Okay, again giving example of the cricketer that I talked about short while ago, right? Many cricketers used to say that whenever we were batting with Sachin, we could play well. We could play well.
कोई ये नहीं बोलता था क्यों, राइट? बट मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या था एग्जैक्टली। वो बहुत सिंपल चीज बोलता था, ही यूज्ड टू टेल वेरी वेरी सिंपल थिंग। वो क्या बोलता था पता है क्या? स्टे देयर मीन्स व्हाट? स्टे देयर, पिच पे खड़े रहो, डोंट थ्रो विकेट, रन नहीं बनते छोड़ो कोई बात नहीं। When you spend time on the pitch, you understand all those things, the behavior of pitch, and then you start middling the ball, right? यहाँ पे रुको, ठीक है, stay and think कि what all things are there, how to handle them, right? So ups and downs तो आते रहेंगे. It's more about staying there, right? एंकर डाल कर खड़ा होना वहां पे, उसको फेस करना, उसमें भी कैसे हैंडल करने में बात करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Please understand that when you stay somewhere, then things start flowing for you. यहां से भाग गया, फिर वहां से भाग गया, रुक, टाइम तो ले, गिव टाइम टू योरसेल्फ, राइट? एंड दैट वुड gradually solve the entire problem. Okay, there is one more thing. विराट कोहली आपका जनरेशन का जो हीरो है, राइट? वो क्या सोचता है रे, हर मैच में सेंचुरी मारूंगा, क्या सोचता है वो? बैटिंग को जाने से पहले क्या सोचता है? या फिर अभी फुटबॉल का फ्यूर चल रहा है ना, मेसी क्या सोचता है? आज 10 गोल मार के आऊंगा, है ना? विराट कोहली से आप सेंचुरी, बस दिमाग में एक ही चीज है, सेंचुरी नहीं. द मोमेंट ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेंचुरी, ही विल बी आउट, राइट? ही हैज टू फोकस ऑन द बॉल दैट इज थ्रोन एट हिम, राइट? ओनली वन थिंग. अभी नेक्स्ट जो बॉल आ रहा है कैसा है, हाउ एम आई सपोज टू प्ले, दैट्स इट. दिमाग में कुछ नहीं होता. फुटबॉल का एग्जांपल ले लो, अभी जो चल रहा है वर्ल्ड कप, लुक एट देम इन द सेमीफाइनल दैट अर्जेंटीना वॉन, राइट? उसमें मेसी क्या सोच रहा था? मैं गोल डालूंगा नहीं, वो ये सोच रहा था गोल कैसे करें. वहां पे रन टाइम, situations at hand change, right? You plan something and something else comes your way. समझ में आ रहा है आपको? And that is why Gukesh is in trouble. Many of you are thinking, कौन गुकेश? क्या बात कर रहे हो? The world champion, right? He is losing almost all matches. Why? There are two things. He is bookish. कैसा है वो? Bookish. आप उसको बुक दो चेस का, वो पूरा उसको दिमाग में डाल करके वैसे ही खेलेगा. द पॉइंट इज, सामने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है, राइट? सेकेंड थिंग, ही इज कैरिंग द बर्डन ऑफ वर्ल्ड चैंपियन साइकोलॉजिकली. दैट इंपैक्ट्स योर एंटायर परफॉर्मेंस. डे वन सोच रहा है सर मैं आईएएस बनूंगा. तो बन तो पहले, राइट? यू रोमांटिसाइज द विद द आइडिया ऑफ बिकमिंग आईएएस, यू डोंट वर्क ऑन ग्राउंड. इसको यहां कैसे अप्लाई करें, जो मैं स्पोर्ट्स के एग्जांपल दे रहा था, राइट? You don't focus on winning the match, you focus on what you are supposed to do, what is your role, right? Your focus should be one day at a time, one concept at a time, one sub point of syllabus at a time. और स्पोर्ट्स क्यों? मुझे बिल्डिंग बनानी तो क्या करना पड़ता है मुझे? आई हैव टू वर्क ब्रिक बाय ब्रिक, राइट? कि सीधा घर रख दिया ऐसे होता है कैसे, राइट? थिंक ब्रिक बाय ब्रिक. भूख लगी है, सामने प्लेट आया, पूरा अंदर डाल दिया, इंडाइजेशन होगा, राइट? यू हैव टू गो बाइट बाय बाइट. Focus on one thing at a time, right? The best way to handle all the pressure कब आता है, ups and downs कैसे आता है? Syllabus is vast. There are 4 GS papers. There's prelim, current affairs, optional. You took one topic, any topic. For example, paper one, history, polity, whatever. You are reading polity और सोच रहे हो मेरे geography का क्या होगा? अरे तो ये बॉल खेलना पहले. You focus on this ball, right? You're thinking of what next ball I would face. Why? ये होने दे, उसकी बात तो आएगा वो, right? Getting this? So the best way is to tell yourself that you have to go brick by brick. Don't think of the result, ultimate result. You think of what you are doing right now. Am I spending this day in a fruitful manner? Am I contributing to preparation in this day? सोने से पहले, before you sleep, you think, what did I add to my preparation? That's it. Simple question. ये नहीं कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उसको छोड़ो. Leave it there. मुझे वहां जाना है उस कोने में. आई नीड टू गो टू दैट कॉर्नर, राइट? तो मैं उधर देखते जाऊं क्या? इफ आई स्टार्ट लुकिंग एट दैट एंड स्टार्ट वॉकिंग,
या तो ये होगा या फिर कोई पेड़ डालेगा, पता है आपको? देयर आर नोटोरियस पीपल एज वेल, राइट? सो आई हैव टू माइंड एवरी स्टेप. एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लिया ना, देन लुक एट योर स्टेप, राइट? मेनी पीपल ओनली कीप ऑन लुकिंग देयर. आपने डिसाइड कर लिया ना मुझे एग्जाम क्रैक करना, समझ गया, अंडरस्टूड. नाउ फोकस ऑन सिलेबस, नॉट जस्ट सिलेबस, वन टॉपिक ऑफ सिलेबस अ डे, दैट्स इट. और उसमें क्या होता है, टेल यू, द मोमेंट आई डिसाइड टू लर्न वन टॉपिक, से फॉर एग्जांपल व्हाट इज रिटन इन preamble, sovereignty. I understood that, I'm happy I understood what is sovereignty. That should be the way. Then next day I'll go for next concept. ये जो ऑप्टिमिज्म है ना, साइकोलॉजिकल अप्रोच, कि आप यू वुड फोकस ऑन वन वन थिंग एट अ टाइम rather than thinking about number of things. So 3 years, 365 days multiplied by 3, those many topics. Even if you give some 2 to 3 hours a day after studying your graduation, right? That's huge chunk of time period at your disposal. आप सोचो ना, 365 multiplied by 3 and those many topics, क्या बचता है? Almost nothing. But are you at it seriously, very seriously, right? One day you studied because you got inspired. 2 days down the line, the momentum was gone. ऐसे नहीं होना चाहिए. That consistency has to be there. At the end of the lecture, I would summarize what all things are required, key elements. But that does not mean I'm not discussing them throughout the lecture. I'm discussing them throughout the lecture. Patience is required, right? Consistency is required, right? And perseverance, tenacity is required. You should be always there in that zone, right? इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को मशीन बनाओगे. I'm coming to it. You should not become machine, हाँ, ठीक है. Learn from different things. Okay, how to increase study hours? ये भी मुद्दा, मैं उसके पास आ रहा हूँ. So ups and downs. Tell yourself that every journey has got ups and downs. Tell me about your own life. Forget about the examination. Do you think that your life was a linear kind of graph? Simple life I'm talking. Forget about examination that you gave. All those times when there were no examinations around the corner, right? Was your life always in the same plane? There are ups and downs, right? Can't you convince yourself that there will be ups and downs, doesn't matter what you do, right? So that is the way to deal with things. And what to do with the downs, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ. Downs का क्या करें, right? So that takes us to other question: how to stay motivated whenever there are downs, whenever you feel little bit depressed. What is to be done? That is where one thing comes helping you. That is your hobby. When people pass mains examination, many students, right, and they are shortlisted for personality test, they come to us and ask, sir, मैं hobby क्या लिखूं? What should I write in the hobby column? मतलब तेरा hobby मैं बताऊं. Many students come to us and say, sir, tell me that hobby which will not attract much questions. अभी से मैनिपुलेशन शुरू है, आगे जाए क्या करेगा, राइट? आई टेल यू वन थिंग, आप जो हॉबी लिखना है लिखो, जो लिखना है लिखो. मैं यहां पे खड़ा होकर सवाल पूछता हूं आपको, चलो. एंड दोज हु आर सिटिंग इन द इंटरव्यू, दे आर much much more knowledgeable than me. Once a student wrote, I like sweeping my home. पूछो जो पूछना है. झाड़ू लगाना अच्छा लगता है घर में, क्या ही पूछोगे. I'm not joking. I took that mock interview in which one student wrote this hobby: I like sweeping my home. तो मैंने बोला, मॉक इंटरव्यू चल रहा है, वेरी गुड, योर हॉबी इज रियली गुड, सो यू लाइक क्लीनलीनेस, राइट? लेट्स नाउ डिस्कस स्वच्छ भारत अभियान. What are provisions under Swachh Bharat Abhiyan, right? And how much work has been done? What challenges government has faced so far in implementation of Swachh Bharat Abhiyan? आ गया ना बाउंसर? अरे भाई, आप कुछ भी लिखो, क्वेश्चंस आएंगे. The only way is to genuinely cultivate hobby. And when you do something as a hobby, you start knowing everything about it, right? So hobby not only helps you prepare for the examination, it also helps you deal with
राइट? दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज, ये जो है ना, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि जा करके क्या है वो उस तरह की बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स एंड ऑल दैट, राइट? मोटिवेशनल स्पीचेस वो होते हैं ना, टेड टॉक्स एंड ऑल दैट, ये कुछ काम का नहीं, आई एम टेलिंग यू, मेक्स नो सेंस, राइट? कीप रिमाइंडिंग यू आपको लाइफ में क्या चाहिए। ओके, आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। कभी कभी क्या होता है, इफ आई गिव एग्जांपल्स ऑफ तेंदुलकर्स एंड कोहलीज एंड गुकेश एंड एवरीथिंग, आपको लगता है बड़े लोगों से हमारी बात करो ना, यू टॉक अबाउट अस, राइट? वन ऑफ माई कजिन्स वंस, आई वॉज इन आई टी बाय द वे, गलती से गया था 5 साल के लिए काम के बाद, बेसिकली एन इंजीनियर, फिर इधर भटक गया। तो व्हेन आई वाज वर्किंग इन आईटी, राइट, वन ऑफ माय कजिन वंस टॉन्टेड मी, टॉन्ट पता है ना आपको? तुम लोग क्या ऐशो आराम में एसी में बैठते हो। मैंने बोला कि कभी ना कभी इंसान को हार्डवर्क करना पड़ता है, ए पर्सन हैज टू पुट इन हार्डवर्क एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, है ना? मैंने वो किया जब एजुकेशन चल रहा था, तब तूने टाइम पास किया। सिंपल आंसर, either you put in hard work here or you put in hard work lifelong. You decide, choice is yours. समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? Those who evade hard work in the study, they do hard work throughout their life without much gain. हार्ड वर्क सभी को करना है, ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस में हार्ड वर्क नहीं कर रहा था। इनको पता नहीं होता, बोलने जाओ तो फिर और टॉन्ट मारते हैं, वो अलग बात, राइट? वंस इन आईटी कंपनी आई वर्क फॉर 30 आवर्स कंटिन्यूअसली, 30 घंटा ऑफिस में, सो के नहीं, काम करते हुए। छोड़ो वो क्या था उस बात को, लिव इट। डजेंट मैटर विच जॉब यू टेक अप, देयर इज हार्ड वर्क, बट वेदर दैट हार्ड वर्क इज पेइंग और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशनल हार्ड वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो मोटिवेशन इतना सिंपल है, व्हाट आई वांट, डू आई वांट गुड रिटर्न्स फॉर माय हार्ड वर्क और डू आई वांट टू डू डोंकी वर्क थ्रू आउट माय लाइफ? सबसे हार्ड वर्किंग डोंकी होता है, पता है आपको क्या मिलता है उसको? सो स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, एंड ये जानना चाहिए आपने कि कहां पे हार्ड वर्क करना जरूरी है। So you decide whether you want to do your time pass in those 3 years of graduation, or you want to put in efforts now and reap the benefits later on. या फिर आज टाइम पास करना है, कुछ बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म यहाँ एंजॉय करने, फिर लाइफ पूरा खत्म करना। यू डिसाइड, एंड डोंट थिंक दैट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूपीएससी। आई टोल्ड यू एग्जांपल ऑफ आईटी जॉब, राइट? In our times we did not have entrance. The entire life depended on 12th PCM. सो वो 95 प्लस है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो जो 3 डेट्स वाला सीन है, अच्छा कॉलेज मिला तो कैंपस मिलेगा, इट वाज दैट काइंड ऑफ लाइफ, राइट? आजकल एंट्रेंस में हार्डवर्क डालना पड़ता है, बट द पॉइंट इज, यू डिसाइड वेयर टू पुट इन द हार्डवर्क। ये खुद को बोलो, टेल यूर सेल्फ कि आप 5 years डाउन द लाइन क्या देखना चाहते हो खुद के बारे में। कहीं पे गधा मेहनत करता हुआ इंसान दिखना चाहते हो, या फिर कोई स्मार्ट वर्क करता हुआ इंसान दिखना चाहते हो, राइट? एंड दिस इज द प्रोफाउंड काइंड ऑफ थॉट, एक थॉट होना चाहिए आप में। बट कभी कभी क्या है ना, थॉट्स वगैरह काम नहीं करता, मैं लो हो तो लो हो, छोड़ो ना, फंडे क्यों आ रहे हो? तो वहां पे एक हाथ शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट, हाँ, वीडियो लेके बैठा 3 घंटा उधर ही चला गया, ये नहीं होना चाहिए। यू लुक एट हाउ तुकाराम मुंडे इज हैंडलिंग थिंग्स, वो आते हैं ना शॉर्ट्स, वो आपको मोटिवेट करेगा, ओ आई वांट टू डू दिस जॉब, ओके लेट मी कम बैक एंड स्टडी। फिर उसमें बह के नहीं जाना है, एंड इफ यू गेट कैरिड अवे यू स्टॉप वाचिंग ऑल दोस थिंग्स। एवरीथिंग इन मेजरमेंट इज बेनिफिशियल, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, टेल मी अबाउट ह्यूमन बॉडी अ बिट। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी? हाँ, कौन बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स? गुड। मैं सोच रहा था थोड़ा पढ़ाई किया होगा आपने, उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन करोगे, राइट? अरे भाई वो जिंदा रहने के लिए है। अरे हाँ, वो असिस्ट करता है फॉर कंबशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब सब कुछ बताओगे क्या होता है शरीर में?
कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो ऑक्सीजन ले क्या करोगे? सोनम वांगचुक जिंदा है क्या? मर रहा है। लो ऑक्सीजन, जितना लेना है लो, दुनिया भर का डालो अंदर। इसको बोलते हैं पढ़ाई जब इनकम्प्लीट होता है ना, इस तरह के आंसर आते हैं। टेल मी वन थिंग, आज सोनम वांगचुक टू लिव ऑन ऑक्सीजन, ही इज लिविंग ऑन ऑक्सीजन, राइट? तो क्या हाल है उसका राइट नाउ? इवन ही इज ड्रिंकिंग वाटर एज वेल। सो व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स। और जब वो खत्म होता है बॉडी का, वो प्रोटीन्स खाने लगता है, एंड दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मसल्स, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स फिर रिक्वायरमेंट है हमारा, राइट? बहुत खाओगे तो, इफ यू ईट टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यू विल डाई वन डे। डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, वेट बढ़ेगा। डू यू नो दिस? सो एनीथिंग इन एक्सेस इज फेटल, डेंजरस। एवरीथिंग हैज टू बी इन मेजरमेंट। तो इतना वीडियो क्यों देखते हो? दिन रात वो फोन लेकर के मर रहे हो क्या? एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट? चीजें आपके लिए है, आप उनके लिए नहीं हो, राइट? सो मोटिवेशन, उसका एक टाइम पीरियड होता है। सर 10 घंटा काल में कल मोटिवेशन ढूंढ रहा था। यू वेस्टेड। एंड आपकी बत्ती लगने के लिए 10 घंटा लगता है क्या? You can watch certain motivational stuff on all those things which are available to you, but that should not go beyond 5 minutes. And also depends what are you watching. मोटिवेशन के मैं टेक टॉक देख रहा हूं, वो बिजनेसमैन है, कुछ और बता रहे, आपका फील्ड कौन सा है, राइट? वॉच आईएएस ऑफिसर्स, उनके कुछ विजिट्स होते हैं, कुछ काम करते हुए कुछ वीडियोस होते हैं, दैट वुड कीप यू मोटिवेटेड, नंबर वन। एंड नंबर टू, आई टोल्ड यू, इवेंचुअली इट्स योर लाइफ दैट यू आर प्लेइंग विथ। रिमाइंड योरसेल्फ एवरी टाइम, ठीक? सीरियसनेस इज रिक्वायर्ड, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड बिकम ओवर सीरियस। लाइफ एंजॉय भी करनी है, मैं उसके पास आ रहा हूं, उस चीज के पास, कि हाउ टू हैंडल और बैलेंस थिंग्स आउट, राइट? यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स, डोंट वरी, राइट? सो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड? हाउ डू यू प्रिपेयर योर माइंड फॉर दिस जर्नी, राइट? इट्स नॉट दैट इन वन डे यू विल प्रिपेयर इट, इट्स अ प्रोसेस। क्या है वो? इट्स अ प्रोसेस, राइट? योर प्रिपरेशन इज अ प्रोसेस, कल्टिवेटिंग योर माइंड इज अ प्रोसेस. And I'll tell you one thing, you would come across a lot of inspirations in your reading. Biggest inspiration than these videos and all that is reading. When Dr. B.R. Ambedkar died, you would learn that in history, right? Before death, some 1 month, 15 days or 8 days prior to his death, he completed one book. Writing a book, I'm talking about, not reading. थोड़ा सा बीमार क्या होते हैं हम? Sir, I'm not able to concentrate. These are ordinary failures, right? And he was fighting with terminal illness. What is terminal illness? You're going to die. He knows it. His kidneys are failing. He knows it. In that condition, he wrote a book. Inspiration चाहिए. So you study the syllabus, write books. You would get inspiration in the books itself. ये वीडियो वगैरह भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक? एंड अंबेडकर अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. There are many such people, right? You can take inspiration from, right? So please understand, it's a process. खुद को तैयार करना इस जर्नी के लिए, it's a process. And when you read number of things, read for examination, no doubt about that. Keep this mindset, what I'm reading right now, ये कहाँ useful होगा examination में. That's good thing. But at the same time, apply to yourself. आप अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे हो, ये सोचो जिनको अनटचेबल बोला गया, जिनको एजुकेशन डिनाई किया गया, जब वो लॉ मिनिस्टर बने इंडिया के, द प्यून यूज्ड टू थ्रो पेपर लाइक दिस ऑन हिज हैंड्स, राइट? ऐसा इंसान कुछ ऐसा कर जाता है, आर्ग्यूएबली द बेस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ दैट सेंचुरी, राइट? आर यू गेटिंग दिस? हाँ, इंस्पिरेशन की बहुत कहानियां हैं, बट वही है कि आप जो पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एट द सेम टाइम अप्लाइड. एंड इन एवरी क्लासरूम व्हाइल आई टीच दिस टॉपिक, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि अंबेडकर, वो जो है ना 18 घंटा पढ़ते, वो सही में ऐसा था.
Not every day, but roughly his study hours were quite high, right? इंग्लैंड में थे, he was in England, right? Motivation ले लो एक और. And he used to sit in library day in and day out. Right? Once librarian saw that he was eating bread sitting in the library, and he quietly called him to his cabin. Ambedkar, right? वो गया अंदर. He said, "Do you know that you violated the rules of the library?" He said, "Yes." ये भी होता है. No, 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 I did not do anything. Liars, right? He said, "Yes." Then the librarian said that then you will attract punishment. Ambedkar said, "Yes, I know, but I have a request. Apart from shutting the doors of this library for me, you give any kind of punishment, I'll take it." समझ में आ रहा है क्या आपको? He said, "No, you cannot decide the punishment. It's my authority. And you first tell me as to why you did that." क्या होता है, before you decide punishment for somebody, you should, देखो, crime से ज्यादा important the intention of the crime. I killed somebody. आप क्या बोलोगे, फांसी दो इसको, है ना? ऐसे थोड़ी होता है. It was in self defense. Motive. तो उसने पूछा, why did you violate the rules? He said, "Sir, neither I have money nor I have time to waste like this. बाहर जाके ना खाना अफोर्ड कर सकता हूं, ना उतना टाइम वेस्ट करना अफोर्ड कर सकता हूं. दैट्स व्हाई आई डिड. आई एम हियर ऑन स्पॉन्सरशिप." राइट? गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, पता है ना आपको, ही स्पॉन्सर्ड हिज एजुकेशन. ठीक. तो लाइब्रेरियन बोला, ठीक है, मैं पनिशमेंट आपको बताता हूं क्या है. अंबेडकर सेड, सर, once again I repeat, do not shut the doors of this library. You give any other punishment, that's fine. He said, "No, listen to me. That's my right. You listen to me." He said, "From tomorrow, you would not eat there. You would eat with me in this cabin. I'll bring your tiffin." So why should Ambedkar fight against British? And why others fought against British? वो आप learn करोगे बाद में. Ambedkar never said this, what I'm going to say now. But the point is, he had this kind of thing in his mind. आपकी गुलामी 150 साल की, मेरी 2000 साल की है. Your slavery is of 150 years, right? British rule, so called. But my slavery is of 2000 years. And जो आपकी slavery है, वो मेरी मुक्ति है. Your slavery is my liberation. Because जिसको आप liberation बोलते हो, उसमें education नहीं मिलता था, पानी तक नहीं दिया. ब्रिटिश मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है, ह्यूमन कंसिडर कर रहे हैं एटलीस्ट, वगैरह वगैरह. So in difficult situations, tough situations, how to keep your motivation on? That is one example, right? At what age did Bhagat Singh die? Rather he became martyr. I know लोग बोलते हैं, सर die नहीं, martyr. अरे वो मरने के बाद ही इंसान हुतात्मा बनता है ना, बिना मरे कोई हुतात्मा बनता है क्या? People become very sentimental. In one lecture, one student confronted me, sir आप डेथ क्यों बोल रहे हो, मार्टियर? अच्छा बिना डेथ का कौन मार्टियर हुआ? सेंटिमेंटल मत बनो, उसका क्रक्स ले लो, राइट? सो एट द एज ऑफ 23, और उसके पहले उसने एक ऐसे लिखा है, व्हाई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं. वो पढ़ो, आपको समझ में आया ना, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात. इट इज दैट काइंड ऑफ प्रोफाउंड राइटिंग एट द एज ऑफ 22. बच्चे बोलते सर ऐसे कैसे लिखूं, बताओ ना. वो प्रबंध लिख के गया एट द एज ऑफ 22, राइट? All these things are possible if you earnestly study, right? With sincerity. Augmenting your skills, increasing, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा. प्रिपरेशन ऑफ योर माइंड, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप. और खुद को बर्डन मत करो, डोंट बर्डन योर सेल्फ, राइट? ये सारी जो बातें बता रहा हूं ना मैं, इट्स नॉट टू बर्डन यू, इट्स टू टेल यू दैट लॉन्ग टर्म में आप चीजें इंप्रूव कर सकते हो. यू कैन इंप्रूव थिंग्स, राइट, इन लॉन्ग टर्म.
and that is quite possible. So take it as a process, right? What habits should one consciously cultivate to avoid despair and burnout? Now I would bring that thing. Okay, burnout को क्यों होगा इंसान, despair में क्यों जाएगा? You burn out because of the amount of study that you are supposed to put in, right? How to increase study hours without sitting on the table? इसके बारे में कभी सोचो. How to increase study hours without sitting on the table? You won't sit on the table, no doubt about that. Sitting hours are very important, but they burn you out, right? While you're walking, can you think of what you read today? Can you ponder over it? While you're watching a movie, can you think of something? कोई मूवी हाँ, वो कौन सी मूवी देखना, ये भी मैटर करता है. एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, पोस्टर लगा था पुणे में, हैप्पी न्यू ईयर. वो देख के मुझे लगा थैंक यू, सेम टू यू. इसके लिए 300 रुपए क्यों डालू मैं? इवन द टाइटल ऑफ मूवी टेल्स मी वेदर टू वॉच इट और नॉट. समझ में आ रहा है क्या आपको? कौन सी मूवीज देखते हो आप, ये भी डिसाइड कर लो कभी. सो फॉर एग्जाम्पल, यू वॉच्ड पानीपत, ठीक है, या फिर जॉली एलएलबी. मैंने एक एग्जाम्पल हिस्ट्री का लिया, दूसरा पॉलिटी का. When I watch Jolly LLB, I laugh because there are jokes and the entire drama is quite comedy and sometimes serious. I enjoy it. But after watching the movie, आपके दिमाग में सवाल आता है क्या, is this the situation in our judiciary? If yes, UPSC may ask me a question on reforms in judiciary. So let's frame a simple question. What are the problems faced by Indian judiciary? Suggest suitable measures to reform it. Jolly LLB movie can answer my first part if I connect that to book. समझ में आ रहा है क्या आपको? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम आंखें बंद करके जी रहे हैं, कान बंद करके जी रहे हैं, राइट? इनोसेंट किड जब वो जन्म लेता है, उसको कुछ पता नहीं होता, और मरते समय इसमें कुछ अंतर होना चाहिए, राइट? जितना अज्ञानी आया था उतना अज्ञानी चला गया. What did you acquire in between? On the go, observe, learn things. Not everything is to be learned from the books. Book is the primary sources, no doubt about that. But at the same time, can you really look at something that is happening around yourself, right? For example, अभी वो चल रहा है ना सोनम वांगचुक का, बराबर? Am I right? Social movements is a topic that you see in your paper one. This is social movement, right? Accountability of the government, that is current topic right now. So all these things have to be linked to your syllabus. हमेशा वो book में मत रहो, बाहर देखो, connect. And then when UPSC asks you to write something with examples, आपको struggle करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So to avoid burnout, only thing is change. You're cooking and रोटी आप कुक कर रहे हो, उसको डाल दिया तवे पे, उसको उल्टाया नहीं तो क्या होगा? How to avoid burnout? Change. Change in what? सर पढ़ाई करके बहुत बोर गया, टाइम पास करता हूं अब मैं, 4 दिन. अरे भाई, पढ़ाई कैन बी ट्विक्ड, राइट? उसको आप अलग तरीके से पढ़ सकते हो. ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हैं, मॉनसून का. इसका क्या हो गया, खेला हो गए विथ मॉनसून, राइट? दिस ईयर व्हाई इज मॉनसून इंपैक्टेड बैडली? एल नीनो, व्हाट इज इट? what trade winds? क्यों? क्या बात कर रहे हो भाई, सब आइडेंटिफाई हुआ है. अभी तो बोल रहे थे एल नीनो, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आप लोग. नो, व्हाट इज एल नीनो, पहले ये बताओ. मैंने आपको सवाल पूछा था व्हाट इज एल नीनो, आप भटक रहे हो इधर उधर. व्हाई इट हैपेंस वो आगे का रिसर्च का क्वेश्चन हो गया, उसको छोड़ो. सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ एल नीनो ये इंपैक्ट हुआ, तो व्हाट इज एल नीनो?
ओशन करंट रिप्लेस हो रहे हैं, पेरुवियन कोल्ड करंट एंड इक्वेटोरियल हॉट करंट, राइट? उस एक चेंज की वजह से दुनिया भर में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है। अब उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकते हो, बात अलग है। द पॉइंट इज, यू रेड दिस, आई नो, इन ज्योग्राफी बुक. डिड यू एवर ट्राई टू वॉच अ वीडियो ऑफ हाउ एल नीनो रियली डेवलप्स? आपने ये किया होता तो आप जिंदगी भर नहीं बोलते. ऑल ऑफ यू, आई हैव अ क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज शेप ऑफ अर्थ? आई एम लिसनिंग. उसके लिए, हाँ, उसके लिए वो जियोआइड. जियोआइड. स्फेरिकल बोलो ना, मुझे सिंपल. रैंचो किधर है? वेर इज रैंचो? आई वॉन्ट अ सिंपल आंसर. स्फेरिकल, गोल है, गोल गोल कैसा है? ऐसे थोड़ा सा दबा हुआ एक गोल है, राइट, है ना? इसका रट्टा मारा था आपने? डिड यू बाय हार्ट दिस? यस, नो? तो कैसे याद है? देखा है. पिक्चर मेमोरी इज मच बेटर देन हर्ड और रिमेंबर्ड काइंड ऑफ मेमोरी. चीजों को देखो, एक्सपीरियंस करो, एंड यू वुड टेंड टू रिमेंबर देम इन ए लॉन्ग टर्म मैनर. सो बर्नआउट के लिए, अगर मैं पढ़ रहा हूं, बुक पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, एल नीनो दिमाग में नहीं जा रहा है, वीडियो दिखा. सो योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर टू बी यूज्ड लाइक दिस. आप फोन दो आपका, मैं बताता हूं आप क्या करते हो दिन भर. थैंक्स टू द एडवांसेस इन डेटा साइंस, द मोमेंट आई सर्च शूज ऑन Amazon, राइट, यूट्यूब मुझे एड दिखाने लगता है. किसके? शूज के. मतलब आपका डेटा सेल हुआ है इंस्टेंट. सो आपका यूट्यूब खोलूंगा ना मैं, तो मैं क्लियरली जान जाऊंगा आप क्या देखते हो, क्योंकि उसी पैटर्न की वीडियोस सजेशन में आने लगते हैं. सो गो एंड एग्जामिन व्हाट यू वॉच एंड आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इससे तुम्हारा क्या होने वाला है? करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, तुझे क्या लेना है देना उससे? व्हाट आर यू टू डू विद दैट? सो आपको पता है क्या, सैफ अली खान की प्रॉपर्टी ना, वो केस, कोर्ट केस में आ गई. तुझे छदा मिलने वाला है उसमें से. व्हाई कांट यू माइंड योर ओन वर्ल्ड? और ये सब जानने से आपको क्या मिलेगा? टेल मी. यू डोंट बर्न आउट बिकॉज ऑफ स्टडी, यू बर्न आउट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. इतना कचरा भरा है दिमाग में, राइट? उसका एक रैम है रे, उसका भी एक स्टोरेज है. इसमें सैफ अली खान, करीना कपूर, वो यो यो हनी सिंह, बादशाह डालोगे तो ये सब कब आएंगे अंदर? मेक सम स्पेस. थोड़ा फॉर्मेटिंग करो. शिफ्ट डिलीट करना, डिलीट नहीं, वो डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में रहता है. क्रिएट स्पेस. वो है फ्रेशन अप फोन, एंड देन यू कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन. यू चेंज योर हैबिट्स. यू चेंज योर हैबिट्स. अलाइन योर हैबिट्स टू व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. मैं बॉलीवुड के लोगों को फॉलो कर रहा हूं. वो क्या करते हैं? वो पापाराजी होते हैं ना, कोई दिखा, किधर जा रहे हो सर, जिम से आ रहे हो क्या? इससे आपको क्या मिलेगा? टेल मी. व्हाट वैल्यू एडिशन दिस थिंग इज गोइंग टू डू टू योर लाइफ? डू यू वांट टू ज्वाइन बॉलीवुड? वो अलग बात है. और उधर भी ये नहीं करना चाहिए. उधर क्या करना चाहिए पता है क्या आपको? मैं तो मतलब, अगर मुझे बॉलीवुड ज्वाइन करना है एज एन एक्टर, राइट, आई फाइंड मास्टरपीस ऑफ एक्टिंग. वो उसको ना देख के लर्न करने की कोशिश करूंगा. नसरुद्दीन शाह क्या करता है एग्जैक्टली स्क्रीन पे? वो ईरानी हर किरदार में अलग क्यों दिखता है? तो ये, दैट इज योर इंटरेस्ट, राइट? यू कैन चेंज थिंग्स, राइट? यू कैन लर्न, यू कैन वॉच, एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, आई एम टेलिंग यू. सबसे ज्यादा प्लेजर कहां से मिलता है पता है क्या आपको? द बिगेस्ट प्लेजर इज प्लेजर ऑफ नॉलेज, द प्लेजर टू नो, प्लेजर टू नो. बाकी सारे प्लेजर ना ट्रांजिएंट होते हैं. ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड. शॉर्ट लिव्ड. ये भी करोगे आप, ग्रेजुअली वुड एनहांस योर वोकेबलरी. शॉर्ट लिव्ड, भूख लगी खाना खाया, दैट्स इट. वो उसमें फिर वो होता है,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो पहला बाइट जितना अच्छा लगता है दूसरा अच्छा नहीं लगता, वो इतना शॉर्ट लिव्ड है। आपको बहुत भूख लगी है, राइट, मैंने 2 वड़ा पाव दिए आपको, 10 दिए, वो 10वां इट्स लाइक खाने के लिए खाता है इंसान, नहीं तो नहीं खाता। प्लेजर टू नो इज नेवर एंडिंग। आई नो, वो बहुत अलग है, इट्स एम्पावरिंग, इट्स ह्यूज प्लेजर। सो स्टार्ट डूइंग दैट। आप जो भी देखते हो जो भी करते हो, टू नो, ये आई एम टेलिंग यू, कॉन्शियसली नहीं, यू डू दिस टू नो। मैं जानना चाहता हूं करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, ये जानना चाहता हूं, है ना, टू नो। तो उसी को ट्विक करो, जो आपकी लाइफ के लिए यूजफुल है उसको जानो। दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड दीज डेज फॉर योर जनरेशन दिस हैज बिकम वेरी इजी बिकॉज ऑफ एनिमेशंस, बिकॉज ऑफ वीडियोज। बट उसका एक टाइम स्लॉट रखो। You should not get carried away. The first and foremost and the most important source of information knowledge is books. These are all these are all additions to it, small additions. वो होता है ना खाने में, अचार होता है, पापड़ होता है, उसके ऊपर खाना नहीं होता। यू आर हैंग्री एंड आई सर्व योर प्लेट, उसमें बस क्या है, अचार पापड़। एंजॉय, बॉन एपेटिट। दीज थिंग्स आर एडिशनल थिंग्स, राइट? द कोर थिंग इज आपको जो रोटी सब्जी वो चाहिए, दैट इज योर बुक्स। And then these are additional things which can enhance your knowledge, which can avoid the burnout. ठीक है, तो स्टडी में चेंज करके बर्नआउट अवॉइड करना। और कौन से तरीके हैं? आई एम कमिंग टू इट। सो चेंज योर हैबिट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। हाउ टू अवॉइड बर्नआउट? एक्सरसाइज। अब आप बोलोगे सर आप तो अलग ही शुरू हो गए, मुझे कहाँ पहलवान बनना है? अरे पहलवान बनने के लिए कौन एक्सरसाइज करता है, राइट? सिंपल वॉक। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल के बगैर आपकी बत्ती ना शुरू नहीं होती। यू फेस सर लाइक दिस, एग्जाम्पल देने के बाद हाँ सर। And my habit is to give examples around us, right? वन ऑफ द टॉपर्स, नाम मत पूछना किसी का, टेलिंग यू, ये क्योंकि वो पर्सनल चीजें हैं कुछ, लेकिन वो चीजें काफी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस टू यू, राइट? वन ऑफ आवर टॉपर्स पास होने के बाद उसने बताया मुझे कि सर मैं काम करता था हर रोज खाने के बाद शाम को अराउंड 8-8:30 व्हेन आई हैड माय डिनर, मैं जेड ब्रिज जाता था। जेड ब्रिज पता है? हाँ, हंसने लगे लोग। आई नो सर, जेड ब्रिज लोग क्यों जाते हैं वो अलग बात है, ये क्यों गया था वो समझने की कोशिश करो। आई यूज टू गो देयर विदाउट माई फोन विथ मी, अकेला वॉक भी होता है थोड़ा सा, फिजिकल एक्टिविटी। वहां जाके खड़े होके पूछता था कि आज मैंने दिन भर क्या पढ़ा, ट्राई टू रिकलेक्ट। आपके बॉडी को हैबिट लगाओ, ब्रेन को रादर। क्या हो रहा है आजकल, द मोमेंट आई ट्राई टू रिकलेक्ट, याद नहीं आ रहा, फोन खोल के देखता हूं, वाई? उसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, राइट? अच्छा, इज इट दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल आप इसको पूछोगे फोन को, बता ना इस सवाल का आंसर, बता ना, अलाउड ही नहीं है। तो उसका नेट प्रैक्टिस कहां हुआ कि एग्जाम हॉल में बिना कुछ लिए आपको लिखना है? इसका प्रैक्टिस कहां हुआ आपको बता? हर रोज तो फोन पे हो आप। Sir, I train my mind is like this कि if I try to recollect something about a topic that I read, my framework is, do I know 10 points about this topic? Do I know 10 points about this topic? 10 मार्कर 15 मार्कर, इसके लिए 10 पॉइंट्स काफी है। तो खड़े खड़े क्या मैं 10 पॉइंट याद कर सकता हूं? His brain was getting trained like this. Look at the habits, right? His brain was getting trained like this. When he sits in the examination hall, 20 questions to write in 3 hours, roughly 7 to 8 minutes for each question, in which you have to read the question, understand the demand of the question, organize your thoughts and then write. ये possible नहीं है. Take it from me, ये possible नहीं है. जितना टाइम आप थिंक करने में डालोगे ना क्या लिखना है पॉइंट्स, इसने खुद को ट्रेन किया, राइट? And his brain is working like that. The moment he looks at question, 10 points are ready. He just has to write. Habits क्या है आपके, right? Get rid of phone, get rid of any kind of assistance. Don't carry book, don't carry your notes, and spend some time walking, right? The best exercise is walking, I'm telling you.
इट्स स्ट्रेस बस्टर, जानते हो क्या? इट इज स्ट्रेस बस्टर। आई रियलाइज लेट इन माई लाइफ बट स्टिल। एक और स्ट्रेस बस्टर है कुकिंग। ये देख रहे सब मुझे, सर उधर बोलो ना, ये खत्म करो पहले। जेंडर बायसेस, राइट? कुकिंग सभी को आना चाहिए। इट्स नॉट दैट ओनली विमेन कुक एंड मेन ईट। आई नो दे आर होपलेस बट दे कैन चेंज देमसेल्व्स, राइट? एंड कुकिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दिया फिर बनाने लगे, नहीं। राइट फ्रॉम आटा बुनने से सब कुछ आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, खाना बनाने के बाद किचन क्लीन करना चाहिए। खाना बनाने गया कभी और किचन ऐसा करके रखा ना, देखने की इच्छा नहीं हो रही। ये सारी चीजें आप स्ट्रेस बस्टर, जानते हो क्या? छोटी चीजें हैं, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लो एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ये नहीं कह रहा हूं कल एग्जामिनेशन है तो मैं कुकिंग करता हूं नहीं नहीं नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3 years हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ, राइट? बेसिक थिंग्स, सिंपल थिंग्स। टेक अ वॉक। दोज हु गो टू जिम, नथिंग रॉन्ग इन दैट, उसमें कोई चीज गलत नहीं है। कीप इट मॉडरेट टू द मॉडरेट लेवल। जिम करने गया, इतना किया ना, पूरा बॉडी एक हो रहा है, और ऐसा सोया कि 10 घंटे उठा ही नहीं। क्या फायदा उस जिमिंग का? यू आर नॉट हियर टू बिकम सलमान खान, राइट? एनीवेज इज अ क्रिमिनल। आपको वो करना है क्या? नहीं, आपको खुद को फ्रेशन अप रखना है, राइट? फुल ऑफ एनर्जी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, एक और हैबिट कल्टीवेट करो। वन मोर हैबिट, टू पीछे चला गया लेकिन इसी का हिस्सा है। वेन एवर यू ईट लेस देन योर एपेटाइट। लिटिल बिट लेस, राइट? नाश्ता किया 4 प्लेट, क्या है, नींद आती है, राइट? मेनी स्टूडेंट्स come here and they are almost sleeping because they had heavy breakfast, I'm telling you. सिंपल सी बात है, when the food goes into your stomach, more flow is required for digesting it. Your blood flow to the brain reduces and then you get dizziness. Eat moderately, maybe multiple times, doesn't matter, to keep you active, full of energy. Take a walk, 30 minutes, 45 minutes, it would help you a lot, immensely. एक वॉक लेकर के वापस आ जाओ, फिर पढ़ने बैठो, you would understand what I'm saying. आफ्टर ईटिंग खुद को हैबिट लगाओ कि हाँ, आई टेक अ वॉक 20 minutes, नॉट मोर देन दैट। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स हु कम टू अस एंड से सर आई एम ओवरवेट, रिक्रूटमेंट हो गया है, वो मेडिकल है, उसका क्या करूं? क्या करूं मतलब? दे गो फॉर देन रिगोरस काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट वुड रिड्यूस योर वेट। ये चीजें अच्छी नहीं है, ड्रास्टिकली रिड्यूस करना, ड्रास्टिकली इंक्रीज करना। अभी से शुरू करो। तुकाराम मुंडे को देखा क्या आपने? मैं उनका नाम बार बार ले रहा हूं। उनका एक स्टेटमेंट है, शादी के 15-20 साल बाद अगर आपको शादी का जोड़ा आ रहा है ना, कपड़ा, यू आर फिट। क्योंकि उसके बाद वेट बढ़ता है आफ्टर 25-30, वेट गेन। आप काफी एक्टिव रहते हो अभी। उनका एक स्टेटमेंट है, इन लास्ट 20 years मेरा जो वेस्ट साइज है वो नहीं बदला, दैट डिड नॉट चेंज। एंड ही हैज गॉट टू द एग्जामिनेशन, राइट? ही इज एट द जॉब, बट लुक एट दैट काइंड ऑफ अटेंशन टू हिज हेल्थ, एक्सरसाइज। ये लाइफ लॉन्ग चीजें हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, वंस यू गेट हैबिचुअल टू समथिंग ना, उसके बाद वो नहीं करेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगता है। मैं आपको खुद का एग्जांपल दे रहा हूं ना कि आई स्टार्टेड दिस थिंग्स वेरी लेट एंड वेरी बैड काइंड ऑफ स्टफ, राइट? अभी क्या है, इफ आई डोंट गो फॉर द वॉक एटलीस्ट फॉर 45 minutes, आई एम रेस्टलेस। मैं घर पे चिल्ला तो मुझे जाना है, छोड़ो। वो हैबिट की बात है, इट्स मोर अबाउट हैबिट। वंस यू गेट हैबिचुअल टू समथिंग ना, देन वो उसका प्रेशर नहीं आता, बर्नआउट अवॉइड होता है। एंड व्हाइल टेकिंग अ वॉक, थिंक ऑफ समथिंग दैट यू रेड। समझ में आया आपको? सो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप कुछ हेवी करोगे, नो, राइट? इवन प्लेन सिंपल मेडिटेशन। फिर सर शुड आई ज्वाइन आर्ट ऑफ, अरे भाई तू शांति से सिंपल नहीं हो सकता क्या? कहीं मत जाओ, जस्ट सिट बैक एट होम इन एन आसन, सिंपल। और मैं आपको एक टैक्टिक बताता हूं। व्हेन यू सिट, क्लोज योर आईज, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, राइट?
और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब इंस्ट्रक्टर बोलता है ना मेडिटेशन वाला, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, तो सारी चीजें हमें आने लगती, तभी उल्टा होता है। ह्यूमन ह्यूमन माइंड इज वेरी स्ट्रेंज। सो वन टेक्टिक इज, ये मत बोलो क्या नहीं करना, ये बोलो क्या करना है। ह्यूमन माइंड को ना पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन नेगेटिव वंस, राइट? जब आप बोलते हो ना डोंट ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो उसका प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? ब्रिंग एवरीथिंग इनसाइड, राइट? है ना? सो वन टेक्टिक इज टू लुक एट योर ब्रीथ, incoming, outgoing, and try to find where that breathe is touching your inside part of nostrils. इनकमिंग ब्रीथ कहां टच कर रहा है, आउटगोइंग ब्रीथ कहां टच कर, ये बैठ करके शांति से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। दैट्स इट, फॉर 10 minutes एंड स्टॉप इट। यू विल फील फ्रेश। रीजन इज बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग दैट इज वेरी टेंडर। इट्स डिफिकल्ट टू लोकेट दैट, राइट? तो आपका माइंड सब कुछ हटा करके वहां आ गया। सो ऑल दोस थिंग्स which are diverting you have gone, and for 10 minutes your entire brain relaxed. समझ में आ रहा है? छोटी चीज है ये, कोई एक्सरसाइज नहीं है, बड़ा 10 मिनट का है, राइट? सो get into this kind of habits, and this could really help you a lot in terms of enhancing your output energy in a particular day, right? What is the importance of pursuing a hobby? I told you what is the importance of pursuing a hobby. It freshens you up, right? It prepares you for the examination. At the same time, it avoids burning out, right? Rather very important kind of thing. Hobby gives you pleasure. ठीक है? क्या है आपकी हॉबी? किसी की है क्या? कि सो फार यू आर हॉबीलेस? क्या है तुम्हारी हॉबी? हाँ, ओके, यू वर सेइंग समथिंग, यू आर रेजिंग योर हैंड। नहीं, ओके। और कुछ? यू प्ले क्रिकेट, यू वॉच क्रिकेट, व्हाट? यू शुड वॉच एज वेल। हाँ, नहीं बता रहा हूँ, ये लिखोगे ना तो बहुत सवाल आएंगे, तो अभी से शुरू करो। Those who like cricket, they are worst in terms of knowing cricket, I'm telling you. मैं जानता हूँ कि सबसे रेगुलर हॉबी इंडियन लोगों का, इंडियन पीपल हैव इंटरेस्ट इन ओनली थ्री थिंग्स, 99% ऑफ देम: क्रिकेट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स। आप देखो, the discussions all around you are happening because of these three things, right? But people know least about it. They know least about it. तो मैं आई टेक मॉक इंटरव्यूज, तो एक बच्चा ऐसे ही बोला मुझे, सर उसमें लिखा था वॉचिंग प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने बोला ओके, टेल मी सम इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द गेम एज फार एज ओडीआईज आर कंसर्न। वनडे इंटरनेशनल कुछ नहीं बोल पाया, ठीक? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दैट इनर सर्कल, नंबर ऑफ बॉल्स विच आर टेकन, राइट? पहले एक ही बॉल यूज करते थे फॉर 50 ओवर्स, नाउ 2 बॉल्स, राइट? वो जो नए टेक्निक्स आए हैं आउट है कि नहीं डिसाइड करने के लिए, उसके बारे में बात करो, राइट? नंबर ऑफ बाउंसर्स कितने लिमिट हुए हैं, पहले वाइड बॉल इमीडिएटली द लेग साइड नहीं था, वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज, खेलना अलग बात है, यहाँ पे खेलना वो ऐसे नहीं बोलेंगे अच्छा ठीक है इंटरव्यू में उधर जाओ बेटा बैट ले लो और खेल के दिखाओ। दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस, याद रखना। सो यू प्ले क्रिकेट, गुड थिंग, बट यू वॉच इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ थिंग्स सो दैट ग्रेजुअली यू वुड। अब देखो, ये तो प्लेजर है आपका देखना, उससे लर्न भी करो ना। सी, हॉबी के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो, राइट? राइटिंग वुड हेल्प यू इन द मेंस एग्जामिनेशन इवेंचुअली। So cultivate hobby. That is going to help you in the examination in numerous ways, more than one ways, right? Very, very important part. Those who are saying मेरा कोई हॉबी नहीं सर, मैं ना ऐसे आया हूँ। You know what is the difference between animals and humans? Humans and animals, पहले ये समझ लो। मेरा सवाल ये होना चाहिए, what is the difference between humans and other animals? Humans have hobby. एनिमल्स का क्या हॉबी हो सकता है? टेल मी। ओके, एनिमल्स ओनली फॉलो नेचर, भूख लगी खाना खाते हैं, प्यास लगी पानी पीते हैं, राइट? नींद आई सोते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करते बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड। सो यू आर ह्यूमंस, यू हैव डेवलप्ड ब्रेन, उसके उसका एक इंडिकेटर है, वन ऑफ द इंडिकेटर्स, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी क्या कोई भी जॉब ले लो उसमें ये पूछा जाता है, दिस आस्क्ड व्हाट इज योर हॉबी, राइट? दे वांट टू नो वेदर यू आर ह्यूमंस और नॉट। राइट?
How do you prepare your mind for this journey? This is what we are discussing throughout. I would summarize that in the end. माइंड को कैसे ट्रेन करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, वैसे भी बात कर ही रहा हूं. हाउ टू मेंटेन ओवरऑल कंसिस्टेंसी. 3 years, 4 years, I am doing this without getting bored. How do I do it? Good thing about UPSC syllabus is it has got number of subjects. मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा, ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के बोर हो गया, गो फॉर हिस्ट्री, गो फॉर पॉलिटी, राइट? Change of subject also really does a lot of good things to you, right? And सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू लुक एट एनी सक्सेस स्टोरी. आई हैव हर्ड SRK से दिस, शाहरुख खान. आपको अच्छा लगता है नहीं लगता मैटर नहीं करता, बट आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स. आई एम नोबडी, बट हर एक का अपना ओपिनियन हो सकता है ना, राइट? वो एक्टर नहीं, वो हीरो है. वो उसको कोई भी रोल दो, रोल मैटर नहीं करता, मैं बस ये करूंगा, इसको क्या मतलब है रोल क्या बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए? My criteria of actor is when I'm watching that actor, I should not feel like I'm watching Shahrukh Khan. I should feel like I'm watching that character. वो फील नहीं आता उसको देख करके, वो हावी होता है खुद का स्टाइल. मैंने इसलिए वो बोला कि बोमन ईरानी एंड दैट नसरुद्दीन शाह, ये लोग अलग है, देयर कैरेक्टर लुक स्ट्रॉन्ग दैन देमसेल्व्स. एनीवेज, बट ही इज अ ग्रेट स्टार, यू कैनॉट डिनाई दैट, राइट? उसने बोला ये जो है ना कि पीस एंड व्हाट, रिलैक्सेशन, है ना, कुकुम्बर लगा करके मैं थोड़ा सा क्या है स्पा में जाके बैठता हूँ. He said सक्सेस इन लोगों को कभी नहीं मिलता. You have to work day in and day out. सोना एंड ऑल दैट, राइट? आपको लगता है ना शाहरुख जैसा बनना है, उसको पूछो कितने बजे सोता है वो और कितने. ही स्लीप्स ओनली फॉर 4 hours, 4 to 5 hours, not more than that. We want stardom, we want success, but are we ready for that? Are we putting in the efforts? So consistency is very important. Consistently every day I would study for what, 2 hours. चलेगा 2 घंटा, लेकिन हर रोज 2 घंटा. Can you do that? Simple चीजें हैं, but difficult to do. So training your body and mind for these kind of things, right? Again, the entire process has to be understood, right? Number one. Number two, I would increase my study hours on the table, but at the same time, I would bring some changes so that my study continues for longer duration of time. That also ensures your consistency. I talked about that. Watching a movie which has got content which is according to some part of a syllabus, right? Maybe watching a video for a few minutes, right? So all these things can also enhance your consistency of study, but you should not lose that consistency at any cost, right? How to manage excessive social media usage? You stop it. क्या मैनेज, क्या स्टॉप इट. सबसे यूजलेस चीज ये है, आई एम टेलिंग यू, सबसे यूजलेस. फेसबुक, इंस्टाग्राम. आई नेवर ओपन इंस्टाग्राम अकाउंट. फेसबुक का अकाउंट था मेरा जब मैं कॉलेज में और जॉब में था, बट देन आई अबॉलिश्ड इट फॉर अ सिंपल रीजन. आई थिंक दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू मी आर नथिंग बट पर्सनल लाइफ मेड पब्लिक. मुझे नौशिया आने लगा, पता है क्या आपको? लोग अपने बच्चे का फोटो डालते, माय प्रिंस. अरे बाकी लोगों को जोक लगता है, अपना बच्चा अपने को अच्छा लगता है. पता है कि आपको खुद का जोक क्यों बना रहे हो दुनिया के सामने? Right? When you start realizing this, you are being a joke for others. You are unnecessarily losing your privacy. लोगों को ये करते हुए देखा है मैंने. ऐसा फोन लेते, इधर सनसेट है, सी. अरे तू पैसा दे के आया ना इधर, तो तू देखना, दुनिया को क्यों दिखा रहा है? एंड आई हैव सीन पीपल होल्डिंग आईफोन लाइक दिस, आईने के सामने. आईफोन इज हैविंग पावरफुल कैमरा, यू कैन गो फॉर सेल्फी, राइट? नहीं, लेकिन वो लोगो देखना चाहिए ना. एप्पल का प्रेस्टीज पॉइंट, तो प्रेस्टीज तुम नहीं, वो गैजेट है, राइट? आईफोन क्यों खरीदते हो? Those who buy iPhone, do they even know what all functionalities are there in iPhone? Why should I buy iPhone? I'll tell you my requirement. मुझे ना एक बटन चाहिए फोन पे, रेड वाला, काटने के लिए फोन, और एक ग्रीन चाहिए लेने के लिए. और आजकल ना थोड़ा सा वो बच्चे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप होना चाहिए उसके ऊपर, राइट? और फिर वीडियोस एंड ऑल दोस्त एजुकेशनल कंटेंट है उसमें, वो होना चाहिए. दैट्स इट. मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला यू शुड बाय आईफोन. बोला व्हाई? बोलता है उसका टच का फील ना इतना अच्छा है ना. बोला दिखा, मैंने लिया, हाँ अच्छा है, ले. इसके लिए 1.5 लाख डालू, नैनो आएगा उसमें.
इसके लिए 1.5 लाख डालो। हेलो, आप कोई भी फोन ले लो, 1.5 साल 2 साल आजकल, नॉट मोर देन दैट। मेरी नीड क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, मेरा प्रेस्टीज ये डिसाइड नहीं कर सकता। दिस गैजेट कैनॉट डिसाइड माई प्रेस्टीज, राइट? These days people are deciding somebody's prestige based on these things. What is my personality, what do I do, इसके ऊपर प्रेस्टीज नहीं बन रहा। ये चीजें हैं क्या? चेंज योर आउटलुक एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट? सो सोशल मीडिया इसे बंद करो, स्टॉप इट। आपके इंस्टाग्राम इज द मोस्ट यूजलेस प्लेटफॉर्म एंड सो इज फेसबुक। I would suggest you to keep your YouTube to watch some videos which are really useful. And you talk to any topper, they would say कि मैंने 2 साल के लिए 3 साल के लिए बंद कर दिया था। किसी को भी पूछो आप। So you decide what is to be done. इसके ऊपर रह करके यहाँ पे करियर बनाना है एज अ व्हाट्सएप एडमिन, कि सही में एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, यू डिसाइड दैट, राइट? एंड देयर शुड बी सम टाइम स्लॉट फॉर इवन यूट्यूब एंड व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग, राइट? मेरा फोन खोल के देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसमें आप व्हाट्सएप देखना, कई सारे ग्रुप्स ना मैंने साइलेंट करके रखे। आई नेवर वॉच इट। उधर हजारों मैसेज गिरे हुए, कहां फुर्सत है? अपना लाइफ पे फोकस करो ना, राइट? एंड दोज हु रियली वांट टू टॉक टू यू, दे वुड टॉक टू यू डायरेक्टली, नॉट ऑन द ग्रुप। It is that simple, right? So stop using social media. Stop using social media, right? All together. जहां पे आपके अकाउंट्स है, यूट्यूब की बात अलग है, उधर भी क्या देखना है, फिल्टर लगाना चाहिए आपने। What factors should be considered while forming a good circle of friends? Only one factor. See, birds of same feather flock together. A man is known by the company he keeps. आपके दोस्त कैसे बताओ, मैं आपका कैरेक्टर बताऊं। And here, the simple criteria is those who can be useful to you in terms of preparation and you can be useful to them. लास्ट ईयर एक बच्चा हुआ, उसने बोला कि सर मेरा ग्रुप है 5 लोगों का, आई एम फोर्थ एंड ओनली वन इज रिमेनिंग नाउ। हम सभी पास कर चुके हैं एग्जामिनेशन। गेटिंग दिस, दैट इज द क्राइटेरिया। आप बोलोगे ये तो स्वार्थ हुआ, स्वार्थ किस चीज में नहीं है बताओ? आई हैव सेल्फलेस लव फॉर यू। टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन, ये सेल्फ इंटरेस्ट है, ये स्वार्थ है। सेल्फलेस लव नाम की चीज नहीं होती। किसी को प्यार करना आपकी जरूरत है, किससे प्यार पाना ये भी आपकी जरूरत है। एंड द मोमेंट आई से लव, एवरीबडी रिड्यूसेस दैट टू गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। अरे और भी लव है दुनिया में, फ्रेंड का है, माँ बाप का है। आई एम कमिंग टू दैट एज वेल, योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, रिलेशनशिप्स, यस और नो। पहले ये तो खत्म होने दो। एवरीबडी इज लुकिंग देयर, सर वी आर वेटिंग फॉर दिस वन। सो योर एंटायर एनवायरमेंट शुड बी लाइक दिस। MS धोनी का मूवी देखा आपने? किससे दोस्ती करता है वो जिसको हेलीकॉप्टर शॉट आता है। डिड यू सी हिज बॉडी लैंग्वेज? लास्ट बॉल छक्का मारता ना वो यॉर्कर पे, तो उसके पास जाता है, 2 मिनट ही घर घर भागना है, बोलते शाम को मिलता हूं तुझे, मुझे नहीं शॉट सीखना है। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। देन दैट फ्रेंड बिकेम एडिक्टेड टू अल्कोहल। ही सेड ये बहुत गलत कर रहा है तू, निकल गया वहां से। सी, पॉजिटिव एनवायरमेंट बनना चाहिए आपसे, निगेटिव नहीं, आपके फ्रेंड से। और समझ लो जो निगेटिव एनवायरमेंट बना रहे हो आपके फ्रेंड नहीं है, राइट? जैसा भी हो सर, दोस्त है मेरा, जैसा भी हो मतलब दाऊद इब्राहिम दोस्त है क्या तेरा? लाइफ एक बार मिलता है, बार बार नहीं। एंड यू डिसाइड, योर चॉइसेस डिसाइड व्हाट यू कैन बी, एंड वन ऑफ द चॉइसेस इज फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, राइट? मनोज पवार नाम है उसका। अभी ये एग्जांपल देने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस ईयर ही इज वन ऑफ द टॉपर्स, यू कैन सी हिज नेम इन द लिस्ट। एंड ही सेड टू मी पर्सनली, इसी क्लासरूम में उसका एक लेक्चर और बाहर जाने के बाद बोला, सर ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया, ही इज द ओनली वन रिमेनिंग among the 5 of us
I'm fourth to get to the list. So the only criteria is this. And don't think that it is for UPSC only. No. आपका फ्रेंड सर्कल वैसा ही होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में रखे, पीछे ड्रैग करने वाला नहीं। वो ड्रैग करे समझो कि आपका दोस्त नहीं है, हितेश नहीं है आपका, राइट? Relationships, yes or no? I'll tell you one thing. Relationship is very important. Every relationship, humans are social by nature, right? तो सारे रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दिस इज अनदर रिलेशन, टीचर स्टूडेंट, राइट? सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, राइट? फ्रेंड के साथ, सभी के साथ यू स्पेंड सम टाइम, बट देयर इज वन पर्सन यू स्पेंड योर होल लाइफ 24/7 ऑलमोस्ट, राइट? ये चॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि दिस इज नॉट द लेक्चर टू डिस्कस योर पार्टनर, but please understand that is a very vital kind of decision of life, right? There are people who don't want to marry. That's different story altogether. But most of us want to marry, right? Relationship ये natural चीज है, उसमें कोई मतलब टैबू नहीं है. There is no negativity as such. But again the same thing. आपका रिलेशनशिप कैसा है? अच्छा, मैं एक आप यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत इंटीमेट काइंड ऑफ स्टोरी है. वन ऑफ द टॉपर्स, आगे मैं टॉपर्स की बात ज्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको वो कनेक्ट हो जाए, राइट? One of the toppers told me that when he couldn't clear examination in his first attempt, he abandoned his girlfriend. Abandoned मतलब बात मत करो मुझसे, ठीक? Then he became IRS officer, right? दोनों साथ में शादी हो चुके हैं. This is test of relation as well. He abandoned means she knows what he is up to. She supported him. मुझे इग्नोर करता है क्या? समझ लो this is not the right choice. वो दो पहिए हैं ना आपकी लाइफ के, तो अगर एक पहिया इधर जा रहा है तो कैसे चलेगा वो सब? यू डिसाइड प्रायोरिटी क्या है. और एक बात बताऊं क्या आपको, फॉर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग योर करियर, यू आर गॉन. ना उसके घर वाले आपको चूज करेंगे ना आपके घर वाले कुछ कर पाएंगे. ये सब रिलेशन वगैरह आता है, नो डाउट, वेरी आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगेन एवरीथिंग इज टेस्टेड ऑन दिस. सिंपल सी बात है, यू लव समवन, दैट पर्सन लव्स यू, राइट? बट व्हेन यू टेक दैट प्रपोजल टू योर होम, क्या बोलोगे? थिंक अबाउट इट. कि ऐसा बस फ्लिंग्स करना है, नहीं टाइम पास था सर, हो गया, राइट? तो अगर आप ये सोचो कि रिलेशनशिप, flings don't come into relationship, those are divergence, choice is yours. बट अगर ये है, it takes energy, तो वो ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो आपको एनर्जी दे, खत्म ना करे आपका एनर्जी, राइट? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने ना वो इंजीनियरिंग में एक बुक पढ़ा था, लेटेस्ट सी नाम का. सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है क्या आपने किसी ने? वो आउटडेटेड हो गया सी प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर लैंग्वेजेस पता है आपको? कंप्यूटर, उसमें से एक सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस, राइट? तो सी लैंग्वेज का एक बुक पढ़ा था मैंने, और उसमें एक, देखो प्रोग्रामिंग में एक डिसीजन मेकिंग नाम का एक चैप्टर आता है. अरे वो एल्गोरिदम पता है ना आपको? व्हाट यू डू ऑन व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट. आपको प्रोसेस कैंसिल करना है कि सबमिट करना है, दो. फिर सबमिट करेंगे तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग रे. तो उस चैप्टर का ओपनिंग कैसे था पता है क्या उस बुक में? वेरी इंटरेस्टिंग. यू इन योर लाइफ डू मेक सम इंपॉर्टेंट चॉइसेस, विच स्कूल टू ज्वाइन, विच करियर टू चूज, राइट? एंड द मोर डिफिकल्ट चॉइस इज whom to marry. और ब्रैकेट में लिखा है ऑलमोस्ट ऑलवेज यू एंड अप विद द रॉन्ग चॉइस, इज डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. ज्यादातर आपका चॉइस रॉन्ग ही होगा एंड में. ये अलग बात है कि यू मेक चॉइसेस. वो स्टेटमेंट सही है. क्यों सही है मैं आपको समझाता हूं. आप देख रहे हो मुझे, सर आर यू मैरिड, एंड आपका चॉइस रॉन्ग हुआ क्या? अरे नहीं, समझो, वी अपेरेंटली फील दैट वी बिकम वन शादी के बाद, या फिर व्हेन यू आर इन रिलेशन यू बिकम, नो, यू नेवर बिकम वन. ये फंडा ही गलत है. टू इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज टू इंडिविजुअल्स, and those individuals can sustain as partners those who know the vices of each other and they accept it. एक दूसरी गलतियां जिनको पता है उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं, वो साथ में रहते हैं. nobody is perfect, nobody can be perfect. समझ में आ रहा है? और ये सर्च, इसको समय लगता है.
तो अभी समय कहीं और देने का है, राइट? I have seen those aspirants who were in the relationship, but their priorities were clear. This doesn't harm you if the priorities are clear. This will harm you if your priorities and your partner's priorities are not clear and they are divergent. And the case I'm talking about, she did not pursue UPSC. He was pursuing UPSC. It could be reverse case as well. He and she could be reverse. But the point is whether your partner understands you or not, whether your partner has got faith in you or not, that matters.